Hello and welcome to RAMANUJAN'S Institute. This is me SHAHNEWAZ Khan. So today I'm going to take a free lecture on Election Commission of India for your upcoming TPSC combined exam. So look at the screen display at your screen that we provide coaching classes for TPSC combined, railway, TCS TPS grade 2, TET-1, TET-2 banking, SSCGD. And one thing I'm glad to inform you that we are starting a fresh batch for your TPSC combined, that is for election inspector, very soon. So connected with us, you will get all the information. We have some social media presence, like you can download this PDF in our Telegram channel. Just type RAMANUJAN'S Institute there, you will find our PDF. As well as we have app in Google Play Store. Just need to type RAMANUJAN'S Institute. And don't forget to subscribe our channel and also share with your friends. So without any further delay, let's start today's discussion. So आज का जो topic है, that is Election Commission of India. That is very important topic for your exam point of view. So what is Election Commission of India? देखिए क्या है. About Election Commission of India. Election Commission, if I say कि what is the purpose of this Election Commission? Remember, democracy जो बोलते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी का कुछ पिलर होता है. हम लोगों को पता है देयर आर 3 पिलर्स इन डेमोक्रेसी, दैट इज जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सो इलेक्शन कमीशन, यू कैन से another pillar which intact the democratic principle of a nation. इलेक्शन कमीशन अगर फ्री रहता है, ऑटोनोमस रहता है, तो क्या होगा, जो इलेक्टेड बॉडी होगा वो जेन्युइनली आपका पीपल्स मैंडेट फॉलो करके आएगा एंड इट विल एनहेंस द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. सो इसलिए इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर एंड इट शुड बी नॉन पार्टीशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्होंने इसको क्या बनाया, इट मेक ऑटोनोमस बॉडी. दे मेक इट ऑटोनोमस बॉडी एंड इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्शन कमीशन मेनली आपका यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसका जो इलेक्शन होता है ना, उसके लिए इलेक्शन कमीशन होता है. और होता है जो स्टेट में इलेक्शन होता है, जैसे विधानसभा होता है स्टेट इलेक्शन के लिए, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है. अदर देन दिस, जो आपका लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, उसके लिए आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से, like there is a provision in the constitution under which like panchayat election and municipal election are being conducted. Okay. So ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये आपका 1950 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया है. दैट मीन्स इट्स ए ओरिजिनल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, that is on 26 January 1950, it was implemented, that is it was executed. So before that, the Constituent Assembly had included this election commission in the Indian Constitution. So it's a constitutional body. Now, where the secretariat of the commission is being seated, it is in New Delhi. Okay, so that is the head office of the election commission is in New Delhi. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. The body administered election to the Lok Sabha, already I have discussed, Rajya Sabha and state legislative assemblies in India, and the offices of the president and vice president in the country. ये आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा. Okay, this is very important because यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है. So in simple term, election commission
election commission is responsible to conduct election or administer election for the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, and the president and the vice president, and all other election are conducted by the state election commission. Okay, it is not concerned with the election to the panchayats and the municipalities in the state, already I have discussed. For this, the Constitution of India provides for a separate state election commission. Okay, now move on to the next slide. Now, what are the constitutional provisions are there regarding election commission? Now, the very, very important article regarding election commission, there is only one article, that is 324. Remember this, 324. Article 324 mainly is responsible for election commission. There are other provisions also. There are other articles related to election commission also, but you just need to remember this article 324. This is very, very important. Okay, it is here mentioned. Did you know the election commission operates under the provisions of the article 324 of the Indian Constitution? Achha. Now, what are the structure of election commission? Okay, ये very, very important. आप लोग देखिए थोड़ा क्या है. Now, structure of the election commission. Originally, the commission had only one election commissioner. That means when the election commission was made, that is on 25th January 1950. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25th January 1950. आप लोगों को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट मीटिंग हुआ था, दैट इज ऑन 25th January 1950. सो उस टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्शन कमीशन वाज जब सेटअप हुआ था, तब जो कमीशन लाइक इलेक्शन कमिश्नर थे एक था, तब ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर वाज देयर एट दैट टाइम. बट ग्रेजुअली विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, जो प्रेशर ज़्यादा हुआ, सो ग्रेजुअली ये इंक्रीज होके अभी प्रेजेंटली 3 मेंबर्स है इलेक्शन कमिश्नर में. एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर है 2 commissioner, election commissioner. So what are the provisions? देखिए, originally the commission had only one election commissioner, already discussed. After the election commissioner amendment act in act 1989, ये आपको याद रखना है. As the TPSC is recruiting for election inspector, so इसके लिए मेरे को हम लोगों को ये इलेक्शन कमीशन अच्छे से पढ़ना है. इसका जो जितना भी अमेंडमेंट एक्ट है वो भी अच्छे से पढ़ना है. सो अंडर दिस एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, उसके अंदर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था. उससे पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी था. सो द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स. दैट मीन्स अदर जो मेंबर्स, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया. एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, उसके बाद अभी प्रेजेंटली 3 मेंबर है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर. ओके, अगर मान लीजिए फ्यूचर में पॉपुलेशन और ज़्यादा होता है, लोकसभा का सीट और ज़्यादा होता है, लाइक इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, सो प्रेसिडेंट कैन मे इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3, 4, 5 लाइक अदर कमिश्नर को बढ़ा सकते हैं. सो एट प्रेजेंट देयर आर इन टोटल 3 मेंबर्स, दैट इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर. हियर इट हैज रिटन दैट 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. ओके, सो ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर ये फ्यूचर में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वट एवर इट इज, इट विल डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट. It will decide by the president. Obviously, where president is written in the constitution, that is, it is by the council of minister. Okay, that is government in power, whoever in the government. Okay, now at the state level, the election commission is held by the chief electoral officer, who is an IS rank officer. ये आपको याद रखना है, very important point. That means state level में election commission को जो help करता है, एक member रहता है, एक ऑफिसर रहते हैं डेजिग्नेटेड, हु इज नोन एज इलेक्शन कमीशन, लाइक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हु इज एन IS ऑफिसर, रैंक ऑफिसर. दैट इज ही शुड बी एन IS रैंक ऑफिसर. ओके, नाउ देखिए अपॉइंटमेंट एंड टेन्यूर ऑफ कमिश्नर. अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपॉइंटमेंट रिसेंटली 2023 में एक चेंजेस लाया गया था इस अपॉइंटमेंट में, कैसे अपॉइंटमेंट होगा. तो देख लेते क्या है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर.
इसका मैं थोड़ी देर नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं. दे हैव ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर. ओके, ये आपको रट्टा मारना है कि दे लाइक वंस दे appointed as a election commissioner, they remain in office for 6 years, at least 6, like maximum 6 years, or age of 65 years, whichever is earlier. Okay, they enjoy the same status and receive salary and perks as available to judges of the Supreme Court of India. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजेस है उनका जो लाइक फैसिलिटीज़ है, उनका जो लाइक स्टेटस है, सेम स्टेटस इलेक्शन कमिश्नर भी एंजॉय करते हैं. नाउ रिमूवल प्रोसीजर भी सेम है. जो आपका अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन कमिश्नर अपने आप से खुद से रिज़ाइन करना चाहता है, रिज़ाइन होना चाहता है, सो इन दैट केस दे कैन रिज़ाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टाइम. अच्छा, रिज़ाइन अगर उनको खुद से करना है तो कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कि उनके अगेंस्ट में कोई कोई मिसकॉन्डक्ट आता है, ठीक है, रेज होता है, सो इन दैट केस जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का रिमूवल प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को फॉलो करके उनको रिमूव करना पड़ेगा. ओके, सो CEC Chief Election Commissioner can be removed from office only through a process of removal similar to that of Supreme Court judge by the Parliament. Okay, जो impeachment procedure होता है. Now ये जो मैंने बोला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. देखिए जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस, यहाँ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस साल बनेगा अगर इलेक्शन इंस्पेक्टर में इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आता है. देखिए क्या है, व्हाट आर द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर. जो मैंने हम अब पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे कि लाइक द इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. दैट इज ट्रू. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी. हियर इज द पॉइंट, a selection committee. Okay, don't get confused. You will get two terms here. One is selection committee, another one is searching committee. Okay, searching committee का काम क्या होता है? searching committee क्या करता है? search committee वो 4-5 eligible candidate को recommend करेगा to the selection committee, and selection committee will select the person and will recommend to the president, and president must appoint that person as the commissioner or chief election commissioner. Okay, I hope the doubt is clear. Now हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या. देखिए, द सिलेक्शन कमिटी विल कंसिस्ट. नाउ सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा. 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स. कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर, ओके, यूनियन मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. ये 3 जन मिलके क्या होता है? सिलेक्शन कमेटी होता है. एंड रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी क्या होता है? उसको सिलेक्शन कमेटी प्रेसिडेंट को देते हैं एंड देन प्रेसिडेंट विल रिकमेंड. नाउ मान लीजिए ये 3 जने हैं, प्राइम मिनिस्टर, लाइक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन में कोई एक एब्सेंट है, वैकेंसी है, लाइक कोई फुलफिल नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है. इन दैट केस आपका लाइक रिकमेंडेशन विल बी वैलिड. ऐसा नहीं कि 2 जने ने रिकमेंडेशन दिया, एक जने एब्सेंट है, नहीं होगा, नहीं, तब भी वैलिड होगा. दैट मीन्स आउट ऑफ 3 2 जने भी बोल दिया, और मान लीजिए कि 3 जने में से 2 पोस्ट वैकेंट है, एक जने भी बोला रिकमेंड किया, तब भी इट विल बी recommended. It should be like president will appoint that person will be as a chief election commissioner or election commissioner. Now search committee, जो search committee क्या करता है? search करके selection committee को recommend करता है. headed by the cabinet secretary will propose a panel of names to the selection committee. Eligibility for the post includes holding or having held a post equivalent to the secretary to the central government. Okay, eligibility selection committee का criteria यही है. Now limitations. What are the limitations? देखिए, the constitution has not prescribed the qualification. Very very important. Constitution ने कोई
माने what are the drawbacks, limitations means what are the drawbacks regarding the election commissioner recruitment and any all other procedure regarding the election commission. The constitution has not prescribed the qualification, that is legal, educational, administrative or judicial, of the members of the election commission. That means any person can become the election commission. The constitution has not specified the term of the members of the election commission. Already I have discussed कि फ्रॉम 1989 में अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 2 जने को इंक्रीज किया, मल्टी मेंबर बॉडी बनाया, उसके बाद इट्स कंप्लीटली डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट किसको कितना कितना मेंबर्स इंक्रीज कर सकते, 2 से 3 कर सकते, 4 कर सकते. सो दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी एंड प्रेसिडेंट like any member can enhance or decrease on the recommendation of the council of minister. Okay, the constitution has not debarred the retiring election commission from any further appointment. That means मान लीजिए एक इलेक्शन कमिश्नर रिक्रूट हुए हैं फॉर 6 years, वो दोबारा भी रिक्रूट हो सकते हैं. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या नहीं किया, नॉट डिवियर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मना नहीं किया कि 1 person can elect election commissioner for multiple times. Now, why it is called as drawbacks? इसलिए ड्रॉबैक्स है. मान लीजिए कि अगर अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको अगर अपीज करेगा, उनको अच्छा उनका बात सुनेगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम द पर्सन विल रिक्रूट अगेन. सो उसके लिए क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसी होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है. ओके, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है दैट लेवल. सो दिस इज अ वेरी स्ट्राइकिंग ड्रॉबैक्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. एंड ये जो मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सो इट वाज नॉट अबाउट द मेंबर्स, इट वाज द टर्म. ओके, हाउ मेनी टर्म्स, कि मैंने बोला कि 1 term, 2 term, 3 term, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेंशन अबाउट द टर्म. ओके, एंड ऑलरेडी मेंबर्स कितना होगा, क्या होगा, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास. नाउ व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये थोड़ा आराम से देखिए आप लोग, बिकॉज इससे क्वेश्चन आया था लास्ट टीपीएससी कंबाइंड मेंस में. नाउ व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में क्या है, फास्ट देखिए. टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज, कि टेरिटोरियल एरियाज क्या रहेगा, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन. डेलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, एक कमीशन बैठेगा कि कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए, इसका इतना कितना एरिया में फैला रहेगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में. सो ऑल दिस आपका डिफाइन करता है कौन, डेलिमिटेशन कमीशन. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेलिमिटेशन कमीशन वो टेरिटोरियल एरियाज जो डिटरमाइन करते वो कौन करते, इलेक्शन कमीशन. ओके, नेक्स्ट, टू प्रिपेयर and periodically revise electoral rules and to register all eligible voters. मान लीजिए कि एवरी इलेक्शन से पहले मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं, बहुत सारे लोग एंटर होते हैं, बहुत सारे लोग आपका एग्जिस्ट होते हैं इलेक्टोरल रोल से. तो उसको क्या करना, पीरियडिकली रिवाइज करना, अपडेट करना. टू ग्रांट, मान लीजिए कोई नया वोटर आया है उसको इंक्लूड करना. सो दीज आर ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना. जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होता है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होता है, ये जो रिकॉग्निशन होता है ये इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है. इलेक्शन कमीशन एंश्योर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन फ्रे. अच्छा, दैट मीन्स और एक चीज़ होता है जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो आपका मान लीजिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया. दैट मीन्स दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट फॉर द, ऐसा नहीं कि किसी को फेवर करेगा किसी को फेवर नहीं करेगा. दैट मीन्स टू कॉन्डक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. एंड जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल होगा, कि कौन सा सिंबल वो लोग यूज़ करेंगे. अगर मान लीजिए कि बीजेपी का जो सिंबल है लोटस, वो अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी यूज़ नहीं कर पाएगा, इट शुड बी यूनिक. सो ये कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन अलॉट करेगा. सेकेंड होता है जैसे मान लीजिए शेड्यूल, जो लोकसभा इलेक्शन कब होगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कब होगा, ये सब भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. ओके, नेक्स्ट देखिए. नाउ advisory jurisdiction and quasi judicial function.
Under the Constitution, the Commission had advisory jurisdiction in the matter of post-election disqualification of sitting members of Parliament and State Legislature. ये आपका हो गया advisory. देखिए कैसे advisory है. That means advise कर सकता है, ठीक है, कि कोई मान लीजिए आफ्टर इलेक्शन कोई मेंबर अगर मान लीजिए कि लाइक बाय रॉन्ग मीन्स इलेक्शन का जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करके वो एमपी बन गए और एमएलए बन गए, सो ऑन दैट केस दे कैन एडवाइज टू द for the disqualification. The opinion of the commission in all such matters is binding on the president, or as the case may be, governor to whom such opinion is tendered. That is, this opinion of the commission is binding. Okay, it is not like SAE. It's binding. For the case of person found guilty of corrupt practice at election which come before the Supreme Court and High Court are also referred to the Commission for its opinion on the question as to whether such person shall be disqualified and if so for what period. That means अगर मान लीजिए कोई opposition party case करता है कि XYZ like for corrupt means apply करके वो एमएलए बना, एमपी बना, सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस कर सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट सच पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट. द कमीशन इज वेस्टेड विथ क्वासी जुडिशियल पावर. दैट मीन्स like have a judicial power also, that is quasi judicial power to settle dispute relating to split margins of recognized political parties. आप लोगों को पता है हॉर्स ट्रेडिंग होता है nowadays कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई एमएलए चला जाता है दूसरे पार्टी में और गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है, कोई मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी मार्ज हो गया, स्प्लिट हो गया. इन दैट केस द कमीशन इज वेस्ट एज जुडिशियल पावर टू सेटल डिस्प्यूट होता है. इन दैट केस कमीशन एक्ट एज ए judicial body. The commission has also the power to disqualify a candidate who has failed to lodge an account of his election expenses within the time in the manner prescribed by the law. That means already I have discussed जो भी rules and regulation होता है उसको अगर नहीं फॉलो करते कोई कैंडिडेट, देन इलेक्शन कमीशन हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई सच कैंडिडेट. Okay, so these are this topic is very easy, very very small topic. Okay, but it's a very very important topic. You should you should remember each and every aspect of this topic, like articles, amendments, what are the procedure of appointment, advisory, administrative power of the election commission. Question definitely will come, will ask TPSC in election inspector, because election inspector is related to election commission. So यहाँ से एक दो question तो बनना ही बनना है. Okay, so let's practice some MCQs. Question number 1 में क्या है देखिए. Which article in the Constitution provides for election commission? Is very easy. Article 324, that is option A. Question number 2. Who appoints the chief election commissioner of election commission? Very very important, easy question, that is president, option C. Look at the question number 3. Currently there are how many members in the election commission? Obviously it is 3 under amendment of 1989. Earlier it was a single member body, now it has a multi-member body. नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड? वेरी इजी, इन द ईयर 1950. क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कब? 25 जनवरी. एंड इसको नेशनल वोटर्स डे भी बोलता है. 25 जनवरी इसको नेशनल वोटर्स डे भी बोलता है. ओके, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे याद रखना ये. व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? क्या होगा बोलिए? ऑप्शन सी, 6 years और 65 years. ऑप्शन 5 सी. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड? इट इज इन न्यू दिल्ली. इट इज इन न्यू दिल्ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Who was the first woman to become chief election commissioner of India? Very very important. Answer will be option A. Option A, V.S. Ramadevi. V.S. Ramadevi. For the election commission at the district level, who acts as the district returning officer? Answer will be district collector. District collector. Okay, यहाँ पे मैंने एक practice question दिया है. Okay, आप घर पे ये करना. Very very important question. Okay, very tricky question as well. 5 marks का question होगा. You should write it within 60 to 70 words. ओके, आप लिखिए, लिखे मेरे को कमेंट
बॉक्स में मेरे को ये पोस्ट करना. ओके, आई चेक इट आउट कि आप लोग कैसे लिखे हैं, और इसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा. ओके, ये है आपका जो लास्ट टीपीएससी कंबाइंड में क्वेश्चन आया था इन 2023 टीपीएससी कंबाइंड. देखिए आप लोग, टीपीएससी कंबाइंड 2023 में क्वेश्चन आया था. इट वाज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द last TPSC combined mains exam, because rest question were very very tough for the student, because like as we know, TPSC has changed its pattern drastically, so we should act accordingly. Okay, आपको आपसे current affairs और न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, and that should be very critically analytical करके analytical power हमको like enhance करना पड़ेगा. Okay, now what was the question? Write any two functions of the Election Commission of India. That was the question. Now ऐसे question जब आता है ना, student क्या करते हैं, they go directly to the functions of the Election Commission. No, at least in one at least in 10 words or like 7-8 words, एक सेंटेंस में आपको थोड़ा इलेक्शन कमीशन को थोड़ा लाइक ब्रीफली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. जैसे मैंने किया इधर देखिए सॉल्यूशन. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसमें बहुत कुछ मैंने बोल दिया. इट्स ऑटोनोमस एंड इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द election commission. Now what are the other two functions? Like two functions of like election commission is conducting election, obviously. So ye jo, like there are so many options you have when you study now, but you have to write in a very concisely, precisely, so that your answer should be very good and it's crisp and crystal and clear. Okay, now conducting election, that is election commission of India is responsible for organizing free and fair and impartial elections at various level, including national, state and local elections. यहाँ पे local elections को आप ये कर दीजिए. local election is actually state election commissioner, but in general election commissioner is doing responsible to like conducting local elections also, if we include state election commissioner. Now you can skip it. Local elections you can skip it. You can write national, state elections. Electoral roll management. The election commission manages the electoral roll. जो मैंने बोला कि न्यू पर्सन को ऐड करना, जो गुजर गए उनको एक्सक्लूड करना. मान लीजिए कोई लाइक आउट ऑफ इंडिया चले गए. ओके, सो इनको अपडेट करना टाइम टू टाइम, विच इंक्लूड्स मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट वोटर लिस्ट. सो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. अच्छा, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे I forgot to mention. Who are the present members of Election Commission of India and who is the present CEC? CEC, that is Chief Election Commissioner, is presently Rajiv Kumar. Okay, Election Commissioner is Rajiv Kumar, and other members is Sushil Chandra and Anup Chandra Pandey. These are the other two members of the Election Commissioner. Okay, Election Commission. So there are in total 3 members, and don't forget to subscribe our YouTube channel. हम लोग इस कंबाइंड 3 को, स्पेशली इलेक्शन इंस्पेक्टर को, आप लोगों को पता है यहाँ पे और भी पोस्ट लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग कि टीपीएससी विल इंक्रीज सम अदर पोस्ट ऑल्सो इन दिस कंबाइंड 3. सो इसका हम लोग बैच शुरू करने वाले हैं. दैट विल बी वेरी वेरी मिनिमम फीस रहेगा आपका, एंड वी आर ऑल्सो लाइक प्रोवाइडिंग मटेरियल्स फॉर दिस कंबाइंड एग्जाम. यू विल गेट बोथ द प्रीलिम्स एंड मेंस मटेरियल्स. आई कैन एश्योर कि ये मटेरियल्स आपका लाइक विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. अपडेटेड मटेरियल्स है, ऐसा नहीं कि पुराना डाटा हम लोग यूज़ करते हैं. एवरी ईयर हम लोग अपडेट करते हैं. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, डिटेल्स में है. यू कैन बाई MCQs ऑल्सो, एंड वी कैन प्राउडली से in last 2 TPSC exam, nearly 90 to 95 questions came directly from our materials. We have the proof also. Okay, so do subscribe our YouTube channel, share with your friends. There will be more free lectures on these combined exams. Okay, and take care. Good night. Bye bye.